All right, we are live. Hello, good afternoon, and welcome back to the Law Entrance YouTube channel and to another Hindu analysis session. Today is 7th of November. It's a beautiful Thursday afternoon. Winter has started kicking in north of India, and I hope all of you are preparing really well for your exams. How many of you are here with me in the class? Can I get some responses in the chat box, please? Kashish is here, Tanishka is here. All right, we'll wait for a few more seconds for more people to join us. And then we'll start today's class. If you guys have joined the stream, please let me know in the chat box. And then we'll begin. Okay, Dhriti has joined, Tanishka has joined, Kashish has joined. आज भी mock test है क्या? आज कैसे turnout कम है? Why haven't people joined the class today? What's the reason? Do you have a mock today? Is something else also going along side by side? Why are students late to the class? चलो थोड़ी देर और वेट करते हैं, then we'll start today's session. Wait for a few more seconds. Till then, if you guys have any questions, you can feel free to ask. आज आपकी क्लास होगी शाम को 8 बजे as scheduled, and today's class would be taken by Siddharth sir. This is not by me. Siddharth sir would be taking your class for decision making today, if I'm not wrong. And please make sure that you attend that class. It would be very valuable, very insightful, and would help you understand the concept of decision making. So please make sure that you don't miss it. People who have joined the stream, can I get some responses from you in the chat box? If you are here, I can see Kashish, Tanishka, Dhriti, I can see Mishika. We'll start when we have a few more people. So jaldi se mujhe hi, hello, responses de dijiye, so that I know that you have joined the stream. काफी सन्नाटा है आज चैट बॉक्स में, ऐसा कैसे? कश्मी इज हेयर, प्रियांशी इज हेयर. ओके, ठीक है, चलो ठीक है. Let's start at 3:02 p.m. I can see 15-16 people on the stream. I'll begin the session if all of you are ready. Can I get a ready in the chat box very quickly from the people who have joined the stream? Ready in the chat box, and then we'll start today's analysis session. Quick ready in the chat box, please. Tanishka is ready, Dhriti is ready, Mishika is ready. All right, Priyanshi is ready, Kashish is ready. चलो ठीक है, start करते हैं आज का session without any further ado. I hope the presentation is visible. Today is 7th of November and these are our topics for discussion for the day. So पहले हम एक newspaper overview ले लेंगे and then we'll come back to these topics. The first topic is PM Vidyalakmi Scheme. This is a new scheme related to the education sector. And we'll get into the depth of this. What is the scheme all about? What is the outlay? What are the features of this particular scheme? Who are the beneficiaries of this particular scheme? We'll do all of that in detail in today's analysis session. Then we have another article which is related to bulldozer justice. Bulldozer justice हम पहले भी कर चुके हैं, but this is not exactly with that religious sort of angle or that controversy sort of angle. This is more about a demolition which happened in the year 2019, which was a demolition of an illegal property, an illegal land, although, but it took place arbitrarily. Like there was no notice served, no notice was issued to the person whose house was razed. The house was razed because they had to construct, they had to, क्या बोलते हैं उसको, चौड़ा करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? They had to broaden the road. They had to increase the width of the road, and for that they raised the house of that particular person. यार मेरी ये केबल नहीं मिल रही. Just give me a second, guys. Okay. I think the cable is lost. No, the cable is not lost. We have found it. So yeah, I was telling you about bulldozer justice. Sorry about the interruption. Then we have an article which is on vehicular pollution, pollution. And this has now become more of a recurring theme in the Hindi newspaper.
So I don't know if we have something new to discuss about this, but there's a mention of a report which I want you guys to know of. There's a 2023 air quality report. So we'll discuss that very briefly. And we have talked about vehicular population quite a few number of times. So we won't really get into the depth of it much today. But the most important news, the highlight news of the day is, of course, the fourth one. That is Donald Trump winning the US elections. किस किस का प्रिडिक्शन सही हुआ ट्रम्प को लेके इवन आई हैड प्रिडिक्टेड आई थिंक क्लास में बताया था मैंने कि नहीं बताया था बट आई हैड अ गट कॉल दैट ट्रम्प वुड विन द इलेक्शन एंड दैट हैज हैपेंड माय गट कॉल्स आर यूजुअली राइट my gut calls are also that you would also make it to the top national universities. I really hope that I'm right once again. Then we have another article, a big article on UP Madrasa Act. A recent judgment has come a couple of days back where the Supreme Court has upheld the validity of the UP Madrasa Act. हाई कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया था बट सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि नहीं बॉस आपका ऑर्डर जो है हम रिवर्स कर रहे हैं एंड दिस एक्ट इज कॉन्स्टिट्यूशनल इट इज नॉट वायलेटिंग द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सो विल सी व्हाट प्रोविजंस वाज इट violating and what were the intricacies of this particular news. Then I have an announcement to make. Let me see how many people are now on the stream. हाँ ओपिनियन ऑन ट्रम्प विक्ट्री हम डिस्कस करेंगे उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अरमान सिंह मेरा सही था आई प्रेडिक्टेड 270 प्लस फॉर ट्रम्प ही गॉट 277 कमला गॉट 229 दैट्स नाइस प्रीटी क्लोज सो मैं आपको बता रहा था लास्ट लैब इज अ न्यू सीरीज ऑफ लाइव सेशंस व्हिच इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 11th of November which is Monday the coming week and that would include रिविजन सेशंस which would be one shot कह लो या फिर complete revision session कह लो या फिर comprehensive revision कह लो whichever way you want to call it. These would help you revise everything you need for a particular subject just within a single session. So the first session would be taken by Siddharth sir on 11th of November which is Monday and that would be the last lab to 2025 and the subject would be English. So you can call it a 60-minute crash course or 1 hour crash course where he would take you through all the concepts of verbal ability with respect to the English subject and would help you, get your revision on track. So make sure you don't miss that. And once again, reiterating, today's logical reasoning class is by Siddharth sir as well. And he would be dealing with the topic of decision making today at 8 p.m. on the YT channel. Make sure you don't miss that as well. So that was an announcement I wanted to make. Let's come back to our newspaper analysis. These are the topics, these 5 topics we'll discuss in detail, but let's have an overview of the newspaper first and see if there is anything else which we want to have a look at. Okay, shall. All right, Donald Trump makes historic comeback, wins second term. We'll discuss this in detail. He has Republicans have secured 52 out of 100 seats in the Senate, and Trump has become the oldest to assume office at this particular age, which is 78 years of age, right? And he has defeated, of course, Kamala Harris, and who has become the vice president along with Trump. Trump has become the president, but who has become the vice president? Can you guys quickly tell me the name? The name of the vice presidential candidate who has won the election, yes, it is JD Vance. And उनकी जो धर्म पत्नी है, her wife is of Indian origin, Usha Vance. उससे related भी एक article है आज newspaper, not relevant for us, but yeah, just a fact. Mishika is saying he's also the first convicted felony to assume office. Yeah, that's also true. I mean, not mentioned in the newspaper, but that's also true. So yeah, coming back to our discussion of the newspaper, Donald Trump has won the election. Then J&K has passed a resolution to restore special status of Jammu and Kashmir, and they would be engaging with the center to initiate a dialogue with regards to their demand of getting statehood for Jammu and Kashmir. तो इसकी काफी ज्यादा बात कर रहे हैं. उमर अब्दुल्ला जो रिसेंटली सीएम बने, उनके मैनिफेस्टो में भी एक मेजर पॉइंट यही था कि हम वापस लेके आएंगे जम्मू एंड कश्मीर का स्टेटहुड एंड उसका स्पेशल स्टेटस जो आर्टिकल 370 रिवोक कर दिया गया था एंड फिर यूनियन टेरिटरी बना दी गई थी. They said they would return back the statehood of Jammu and Kashmir. So let's see what happens. Although that's a tough thing to happen, but let's see. LMV लाइसेंस व्हीकल कैन ड्राइव ट्रांसपोर्ट, ये इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए. अगर आपको ट्रक चलाना तो ये इंपॉर्टेंट है. मतलब if you are a license holder and you want to drive a heavy vehicle, then you can drive a vehicle which is less than 7500 kg in weight. How many of you
having a driving license? Can I get a yes or no in the chat box if you have a driving license? Just a random question. ऐसी मुझे मन हुआ क्यूरियोसिटी से पूछने का. I got my license made as soon as I turned 18 because I had already learned. Okay, मुझे public platform पे ये नहीं बोलना चाहिए. ठीक है. Anyway, moving on. Yamuna highly toxic, says High Court. Bins plea to allow rituals on riverbanks. So this is with regards to the Chhat Puja. By the way, happy Chhat to everyone who is celebrating. Today is, I guess, the major day of celebration, if I'm not wrong. So happy Chhat as well. Chhat Puja पे जो है rituals होते हैं where they do their puja and all along the river side. तो उसके लिए परमिशन मांगी थी लोगों ने कि यमुना पे हमें रिचुअल्स करने दो, बट हाई कोर्ट ने मना कर दिया. उन्होंने बिन्स प्ली मतलब बेसिकली दे हैव रिजेक्टेड द प्ली टू अलाउ रिचुअल्स ऑन रिवर बैंक ऑफ यमुना, दैट यमुना इज हाईली टॉक्सिक एंड भाई हम नहीं अलाउ कर सकते, आपकी हेल्थ के लिए ये खराब है, यू वुड फॉल सिक. सो इसीलिए मना कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने. Then there's an article again on vehicular emissions, top contributor to air pollution. अब ये मुझे लगता है हर दूसरे दिन आर्टिकल आएगा पॉल्यूशन पे जब तक दिल्ली का AQI कम नहीं होता, because the issues of Delhi are the most important as per all the media resources. but ठीक है, important concern तो है ये vehicular emissions and pollution. हाँ, इसको हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. इस बार जो आर्टिकल है उसमें एक रिपोर्ट के बारे में डिस्कशन है, so we'll discuss that report and then we'll carry on. ओके यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पर इम्पोर्टेंट नहीं है, क्राइम बेस्ड न्यूज़ है तो रोज़ ही आने लग गई है. Minutes of meeting with CM not complete, say Bengal junior doctors. This is the same RG case which is going on. CBSE disaffiliates 21 schools over dummy admissions. आप लोगों को पता ही होगा डमी स्कूल्स कौन से होते हैं, यहाँ पे अटेंडेंस का सीन नहीं होता. यू डोंट हैव टू बेसिकली गो स्कूल, यू जस्ट गो टू कोचिंग्स एंड प्रिपेयर फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स. सो उन्होंने सरप्राइज चेकिंग करी, सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने गए कुछ ऐसे में, कुछ राजस्थान में, कुछ कोटा में, एंड दे हैव डिसअफिलिएटेड देम फ्रॉम सीबीएसई, क्योंकि सीबीएसई का मैंडेट है कि 75% अटेंडेंस होनी चाहिए. ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं. लेट्स सी और क्या है स्टेट बेस्ड न्यूज, ये भी हम कवर करेंगे. कांट एक्ट ओवरनाइट, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि यूपी गवर्नमेंट हैज डन एन इलीगल डेमोलिशन. इलीगल नॉट बिकॉज द डेमोलिशन वाज इलीगल पर से, बट बिकॉज द मोडस ऑपरेंडी, द प्रोसीजर नॉट बीइंग फॉलोड, दैट वाज इलीगल. कि आपने नोटिस नहीं इशू किया, आपने डायरेक्टिव नहीं इशू किया, आपने वेट नहीं किया सामने वाली पार्टी का नोटिस का रिप्लाई करने का, आपने एक दिन नोटिस भेजा और अगले दिन रात को उनका घर गिरा दिया. सो दैट इज अनफेयर, दैट इज अ वायलेशन ऑफ नॉट जस्ट fundamental rights but also human rights. That's also a violation of the rule of law and ये चीज आप नहीं कर सकते. तो एक तरीके से कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है यूपी गवर्नमेंट. काफी बार ये हो चुका है एंड काफी बार सुप्रीम कोर्ट इसको पॉइंट आउट कर चुका है, बट क्या ही बोलूं मैं. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. फॉलोइंग डेस्क टू मैंगो कर्नल राइस कोटा, दिस इज नॉट इम्पोर्टेंट. अजीत पवार एनसीपी, नॉट इम्पोर्टेंट. लेटवेट, not important. This is also, this news are mostly not important. ऊपर वाली important इसलिए थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्टिव था वो. Anything which the Supreme Court directs becomes important from a competitive exam perspective. Then what else? Happy that Usha will become second lady of the US, says her 96-year-old grand aunt. तो इनकी जो क्या बोलेंगे ग्रैंड आंट को हिंदी में, चचेरी दादी, ममेरी दादी, फुफेरी दादी, जो उनसी भी दादी हैं ये, तो उन्होंने कांग्रेट्स बोला है उनको. उषा वैंस को सेकंड लेडी बन गई है वो यूएस की. प्रेसिडेंट की वाइफ फर्स्ट लेडी होती है तो वाइस प्रेसिडेंट की वाइफ सेकंड लेडी होती है. सिंपल लॉजिक. रिटेनिंग पावर इज द ओनली ऑब्जेक्टिव ऑफ पीएम, सेज प्रियंका. अरे यार ऐसे नहीं बोलना चाहिए. इन अमेरिका सर्वाइविंग द मेसाया. तो ये आर्टिकल अगेन इज अबाउट ट्रम्प्स विक्ट्री. ट्रम्प की विक्ट्री पे 3-4 पूरा एडिटोरियल ट्रम्प के बारे में आज. वेस्ट एशिया अंडर डोनाल्ड ट्रम्प, तो ये बता रहे हैं कि वेस्ट एशिया में अब क्या implications होंगे now that Donald Trump has come to power. What would happen to the Iran and Israel conflict and in the West Asian region? क्या इजराइल के लिए सपोर्ट बढ़ेगा, कम होगा, ट्रम्प किस तरीके से एक्ट करेगा? That is all what the article is talking about. We'll discuss this as well. What Trump 2.0 means for India. Now this is India specific. India के लिए क्या implications and consequences होंगे now that Trump has come to power? This article discusses that. What can be potential benefits and what can be potential trouble areas. Again, that will affect the global economy. This is related to कि पूरे इकोनॉमी पे, ग्लोब पे क्या इम्पैक्ट होगा. सो तीनों चीजें हैं यहाँ पे, एक इकोनॉमी पे, एक इंडिया पे और एक वेस्ट एशिया पे.
ठीक है, then we have Donald Trump sweeps the battleground. This is more of numerical stats as to किस states में डोनाल्ड ट्रम्प को ज़्यादा सपोर्ट मिला, किस स्टेट्स में कमला हैरिस को सपोर्ट मिला. दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस. आपको यूएस इलेक्शंस की इतनी डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है. Why did Supreme Court uphold the UP Madrasa Act? This will discuss. UP Madrasa Act of 2004 and क्या इसके provisions ऐसे थे कि हाई कोर्ट को इसको रिपील या फिर नल एंड वाइड डिक्लेयर कर देना चाहिए था, या फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन क्या आया, क्यों आया. विल डिस्कस ऑल ऑफ दैट. Okay, then we have Kazuo Ishiguro's temporary relevance. ये important नहीं है हमारे लिए, ये भी important नहीं है. Climate experts worry about Trump's re-election impact. क्यों climate experts worry कर रहे हैं about Trump's re-election? Can anyone tell me the reason for this? मैं हटा देता हूँ यहाँ से, इससे पहले कि आप लोग पढ़ के मुझे बता दो. Why is this not a good news that Trump has come to power in context of climate change and climate related policies? Arman is saying, can we take a look at Indian Express paper as well? More or less same चीजें हैं यार आज तो दोनों न्यूज़पेपर्स में, but ठीक है, टाइम बचेगा तो we'll have a look. Ali is saying he has promised more oil mining. Yes, that is one of the reasons. COP29 is upcoming. Yes, but how is this related to COP29? Yes, exactly. Preetham has given me the right answer. He withdrew US from the Paris Climate Agreement. बिल्कुल सही जवाब. Trump does not care about the environment. मतलब that is way too honest. इतना honest भी नहीं होना था. But ठीक है, fair enough. JPC is meeting groups with no locus standi on Waqf issue. This is not important. ये important है हमारे लिए. PM Vidyalakmi Scheme. This is a new initiative because this is a central sector scheme and a new initiative. We'll discuss this in detail कि इसके क्या-क्या benefits हैं. Cabinet approval मिल गया है इसको. This is again Maharashtra elections, not important for us. Yeah, this is the same. Okay, I think that's all we have in today's newspaper. This is again related to Trump. World leaders pledged to work with Trump after poll victory. तो इनको बधाई दी है सारे लीडर्स ने. मोदी जी ने भी बधाई दी है, राहुल गांधी जी ने भी बधाई दी है. गाजन्स इनको कह रहे हैं भाई हमें बचा लो, बट लिटिल डू दे नो कि अब क्या होने वाला है. जस्ट किडिंग. आई होप कुछ खराब ना हो. 6 इंडियन अमेरिकन्स विन सीट्स इन द यूएस हाउस. तो 6 लोग जो हैं यूएस हाउस में इलेक्ट हुए हैं, जिसमें से 6 इंडो अमेरिकन हैं, यानी कि इंडियन ओरिजिन के अमेरिकन हैं. ट्रम्प गेट्स लीगल रिप्रीव आफ्टर व्हाइट हाउस विन. मुझे ये ऑनेस्टली समझ नहीं आता कि हम इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हैं इंडियन अमेरिकन से. दे आर अमेरिकन्स, मतलब ठीक है, इस कंपनी का सीईओ इंडियन ओरिजिन है, उस कंपनी का सीईओ इंडियन ओरिजिन है. हाँ भाई ठीक है, अमेरिकन बन गए वो लोग, अमेरिकन सिटीजन बन गए, पीछा छोड़ दो उनका. हाँ, IOC वेलकम्स इंडियाज इंटरेस्ट इन होस्टिंग द ओलंपिक गेम्स. इंडिया ने कब के लिए होस्टिंग के लिए अप्लाई किया? कैन यू गाइस टेल मी द ईयर? इंडिया ने किस ईयर के लिए ओलंपिक गेम होस्ट करने की बिड डाली है? कैन एनीवन ऑफ यू टेल मी द ईयर इन द चैट बॉक्स? Vidit Gujarati lost to Mag Sudlo. Okay. Maharashtra. Yeah, nothing else here. That's all we have in today's newspaper. Indian Express भी हम देख लेंगे once we are done with our analysis. Let's begin talking about those 4-5 topics in detail. समझते हैं थोड़ा सा उन topics के बारे में. 2036 is the correct answer. It's not 2038. It's 2036. Absolutely right. Arman is saying, how important are state and interstate schemes? Consortium asked a question from scheme in a sample, but I am aware of that. But again, that being said कि अगर आप state based schemes करने जाओगे तो बहुत सारी schemes हैं, and from an ROI perspective, I don't think that makes a lot of sense. And sample paper जिसमें वो आया भी था question, that sample paper was withdrawn. So that is another aspect to it. But I personally would say कि जो बहुत important वाली हैं, जो बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आई हैं, स्टेट बेस्ड स्कीम्स, उनको कर लो. बाकी सारी तो आप नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है इन द नेक्स्ट 1 month. आई मीन पॉसिबल तो है, बट इट्स नॉट फीजिबल और इट्स नॉट एडवाइजेबल, इट्स नॉट प्रैक्टिकल. ठीक है, तो आई वुड सजेस्ट यू डू ऑल द स्टेट बेस्ड स्कीम, दैट नॉट रेलिवेंट फॉर क्लैट. चलो हम वापस आते हैं अपने प्रेजेंटेशन पे एंड डिस्कस करते हैं थोड़ा सा डिटेल में इन टॉपिक्स को.
तो द फर्स्ट टॉपिक इज द पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम। कोई मुझे बता सकता है पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम किस बारे में है? एनीवन नोस? कोई पढ़ के आया आज का न्यूज़पेपर? चलो मैं बता देता हूँ। दिस इज रिगार्डिंग प्रोवाइडिंग कोलेटरल फी लोन्स टू स्टूडेंट्स हु वांट टू परस्यू हायर एजुकेशन। कोलेटरल फी फ्री loans and also guarantor free loans, so you do not have to make anyone the guarantor of your loan and you do not have to keep any collateral समझते हो ना आप लोग? कि अगर जैसे मुझे मान लो 10 लाख का लोन लेना है तो बैंक वुड से कि हाँ ठीक है, आप पहले 15 लाख की कोई चीज हमारे पास कोलेटरल रखो, बी इट प्रॉपर्टी, बी इट गोल्ड, बी इट स्टॉक्स, बी इट एनीथिंग, ताकि इन केस आप डिफॉल्ट कर जाओ तो वी कैन रिडीम आवरसेल्फ। तो कोलेटरल फी मतलब कुछ भी आपको बैंक के पास गिरवी नहीं रखना पड़ता है, ऐसे ही आपको पैसे मिल जाएंगे। बट ऑफ कोर्स दिस इज अ लोन, दिस इज नॉट अ स्कॉलरशिप एंड दिस इज ऑन वेरी सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स। ठीक है, मतलब फ्री नहीं है बट सब्सिडाइज्ड इंटरेस्ट रेट्स हैं अंडर द पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम। एंड ये किन लोगों को मिलेंगे? ये उन मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलेंगे who secure admissions in higher education institutions which are designated as the best or the quality higher education institutes by the NIRF। कितने ऐसे institutions? 860 ऐसे institutions identified है जो आते हैं अंडर क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन नेटवर्क। क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, आपके टॉप के 2-3 एमएलयूज भी आते हैं इसमें, आई थिंक जिंदल भी आता है इसमें और सिम्बाइसिस भी आता है। 5-6 लॉ यूनिवर्सिटीज आते हैं इसमें, बहुत सारे नहीं आते। बट हाँ, दीज क्वालिटी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन सिक्योर करेंगे बच्चे, उन लोगों को फाइनेंशियल असिस्टेंस देने के लिए ये स्कीम है फॉर गिविंग देम कोलेटरल फ्री लोन्स। एंड एज आई मेंशन दैट दिस इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम का मतलब क्या होता है? ऑल ऑफ द कॉस्ट वुड बी बोर्न बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इसमें स्टेट्स को कोई कंट्रीब्यूशन नहीं देना पड़ेगा, 100% ऑफ द कॉस्ट वुड बी बेयर्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, द सेंटर। ठीक है, और क्या क्या चीजें इसमें हैं ये मेंशन करता है कि दिस वुड बेनिफिट अप्रोक्सीमेटली 12 लाख स्टूडेंट्स इन इंडिया एंड करेंटली इन द करेंट सब्सिक्वेंट ईयर इट वुड बेनिफिट 7 लाख स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया गया है? 3,600 करोड़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर द पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम। एंड ये कब से कब तक चलेगी? ये चलेगी इस एकेडमिक ईयर 2024-25 से 2030-31 तक। 24-25 से 2030-31 तक। ठीक है, तो इसका ईयर याद रखना है, इसका आउटले याद रखना है, इसके बेनिफिशियरीज 22 लाख है वो याद रखने हैं। एंड इसमें अमाउंट कितना मिलेगा वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखना है। लोन्स अप टू 7.5 लाख रुपीज। ठीक है, 7.5 लाख तक का लोन मिलेगा विद 75% क्रेडिट गारंटी। So these are some important facts which you need to remember with regards to this particular news. 860 higher education institutes identified by NIRF, उनको मिलेगा, इंस्टीट्यूशंस को नहीं, स्टूडेंट्स को जो जाएंगे उनमें उनको मिलेगा कोलेटरल फी, गारंटर फ्री लोन एट सब्सिडाइज्ड रेट अंडर दिस सेंट्रल सेक्टर स्कीम कॉल्ड पीएम विद्यालक्ष्मी स्कीम। तो इसमें कवर क्या हुआ? इसमें कवर होंगी उनके ट्यूशन फीस एंड एनी अदर एसोसिएटेड एक्सपेंसेस रिलेटेड टू देयर एजुकेशन। ठीक है, तो आपकी कॉलेज की फीस एंड बाकी सारे हॉस्टल के खर्चे एटसेट्रा एटसेट्रा, वो सब के लिए आप ये 7.5 लाख तक का कोलेटरल फी लोन ले सकते हो एंड इसको फिर आप बाद में आराम से पे बैक कर सकते हो। तो या ऑल्दो टॉप यूनिवर्सिटीज को तो वैसे भी बैंक्स दे देते हैं आसानी से लोन, जो है बाकी यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स को दिक्कत आती है, बट ठीक है, उतना जल्दी भी नहीं मिलता है। अगर आप टॉप की 70, 80, 100 इंस्टीट्यूशंस को छोड़ दो, उसके अलावा बैंक्स यूजुअली डिमांड कोलेटरल टू गेट एजुकेशन लोन्स। बट या अच्छी इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो अपनी भी इनिशिएटिव्स, जैसे नालसर का मैं बात करूँ तो नालसर ऑल्सो हैज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर स्टूडेंट्स। बट या लेट्स नॉट गेट off track. Coming back, so this was all about the PM Vidyalakshmi scheme. That is all you need to know. ये approve हो गई है by the Union Cabinet and this would come into force very soon. मैंने सारी फैक्ट्स और फिगर्स इससे रिलेटेड आपको बता दिए। अब हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, which is Supreme Court said that UP government has done an illegal demolition and they cannot act overnight. इसमें उन्होंने यही बोला है कि अगर encroachment है भी
तो भाई आप इस तरीके से ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं कर सकते, रूल ऑफ लॉ का वायलेशन नहीं कर सकते। आपको रूल एंड प्रोसीजर फॉलो करना ही पड़ेगा। एंड ये इन कॉन्टेक्स्ट है विद द डेमोलिशन व्हिच हैपेंड इन 2019 एज आई वाज टेलिंग यू प्रीवियसली। वहां पे सड़क थी, सड़क के किनारे एक बंदे का घर था। अब उनको सड़क करनी थी चौड़ी, इतनी चौड़ी, तो उन्होंने इनका घर डिमोलिश कर दिया। एक दिन नोटिस भेजा और रात को घर डिमोलिश कर दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई व्हाट इज दिस बिहेवियर, ऐसे कैसे चलेगा? आप एटलीस्ट फैमिली को खाली करने को टाइम तो दो। उसके अंदर, घर के अंदर उसका सामान है, उसके वैल्यूएबल्स हैं, एक्सेट्रा चीजें हैं, तो आपने उसको खाली करने का तक टाइम नहीं दिया, आपने उसको नोटिस का जवाब देने का टाइम नहीं दिया, आपने उसको ऑब्जेक्ट करने का टाइम नहीं दिया। तो दिस इज अगेंस्ट प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एज वेल। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस समझते हो आप लोग? What are principle? Can you guys tell me any one principle of natural justice in the chat box? 3 होते हैं वैसे, बट कोई सा मुझे एक भी बता दोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा। Arman is saying Vidya plus Lakshmi, so money to students for higher education. Yeah, that's a good way to remember it, and probably the logic behind naming it Vidyalakmi as well. Kashvi is saying, what are the most important topics for GK? Most important topics for GK जो हैं हम कवर कर ही रहे हैं, एंड उसके साथ साथ सलिक सर has also started a revision series where he is covering the most important topics in a structured, coherent and chronological manner. So make sure that you follow that. Arman is saying right to be heard in a competent court. Yes. Right to be heard, opportunity to be heard. Nemo judex causa sua. अरे बाप रे, लैटिन लिखने लग गए लोग, क्या बात है, I like it. ठीक है, Nemo judex in causa sua. You cannot be a judge in your own cause is what these guys are trying to say. Rule against bias, है ना, पता है क्या? I know, मतलब थोड़ी बहुत आती है मुझे भी। तो हाँ, दिस इज ऑल्सो अ नेचुरल लॉ प्रिंसिपल या फिर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। You need to get an opportunity to be heard. You need to an opportunity to the other person to hear his side of story in a competent court. You cannot be a judge in your own cause. You have to treat equals as equal. सारे होते हैं natural justice. But हाँ, यहाँ पे हम जो बात कर रहे हैं that is opportunity to be नहीं गई सामने वाली पार्टी को। कोर्ट ने इनकी डांट लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ फॉलो करना है, शुड बी गिवन टाइम टू वेकेट, एंड ऐसे आप मिसयूज नहीं कर सकते बुलडोजर्स का। तो अब क्योंकि आपने ये हरकत कर दी, तो अब इस हरकत को सुधारने के लिए आपको 25 लाख रुपीस कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा उस फैमिली को जिसका घर ने उजाड़ दिया है। तो अब सरकार देगी उनको 25 लाख रुपए। बट वही है कि क्या इससे ये चीजें रुक जाएंगी? मुझे तो नहीं लगता। ठीक है, चलो एनीवे, लगने पड़ता है कि हमें न्यूज पढ़नी है। नेक्स्ट इज वेहिकुलर एमिशंस टॉप कंट्रीब्यूटर टू एयर पोल्यूशन। ये हम टाइम एंड अगेन बहुत बार देख चुके हैं कि हमारा जो वेहिकुलर पोल्यूशन है वो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर बन रहा है इन आवर पोल्यूशन। व्हाट आर सम अदर contributors of pollution? What are some other types of pollution which you usually see in India? Can you guys tell me in the chat box? और कौन कौन सा किस किस तरीके का पॉल्यूशन हमें देखने को मिलता है इंडिया में? इंडिया में हर टाइप का पॉल्यूशन हमारे पास है। बहुत ही ज्यादा हम इंक्लूसिव कंट्री है पॉल्यूशन के मामले में। हर टाइप का पॉल्यूशन हमारे पास, नाम लो, हमारे पास वो वाला पॉल्यूशन है। बट आप लोग मुझे बताओ और कौन कौन से पॉल्यूशन है जो आप डेली एनकाउंटर कर रहे हैं in your daily life, in your cities, or maybe you have heard of it. ये न्यूज इसलिए, लैंड पोल्यूशन इज देयर, इंडस्ट्रियल पोल्यूशन इज देयर, नॉइज इज देयर, फैक्ट्री एमिशन इज देयर, वाटर पोल्यूशन इज देयर, प्लास्टिक पोल्यूशन इज देयर, साउंड पोल्यूशन इज देयर, डस्ट पोल्यूशन इज देयर, फायर क्रैकर इज देयर, माही, ये कौन सा पोल्यूशन है? अटक गई माही। फायर क्रैकर्स आर देयर, स्टबल फायर क्रैकर्स तो यार चलो ठीक है, मान लिया फायर क्रैकर्स भी पोल्यूशन है, बट दैट इज यूजुअली that usually happens in a phase of festivals, है ना। पूरे साल तो पटाखे नहीं बजा रहा कोई। My voice is breaking. Someone has said your voice is breaking. Is that so, guys? Am I clearly audible and visible to everyone? Please मुझे जल्दी से एक confirmation दे दीजिए। Is my voice clear to everyone? लाइट पॉल्यूशन भी है। लाइट पॉल्यूशन तो मतलब उतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता है हमको ऑन अ पर्सनल लेवल, बट हाँ लाइट पॉल्यूशन भी है। बेटर नाउ? अच्छा ठीक है। एक्सट्रीम यूजेज ऑफ सिंगल प्लास्टिक, अच्छा ठीक है, ऑल राइट। बिफोर इट वाज ब्रेकिंग अ बिट, नाउ इट्स बेटर। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है।
एंड हाँ, सही जवाब दिया आप सब लोगों ने। इस बहुत सारे टाइप के हमारे पास पॉल्यूशन है। तो ये आर्टिकल हमारे पास कह रहा है कि जो है दिल्ली का पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। स्टबल बर्निंग इज अ मेजर कॉज। स्टबल बर्निंग रुक नहीं रही है, उस वजह से एयर पॉल्यूशन जो है फार्म फायर्स के कंट्रीब्यूशन की वजह से बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसमें एक रिपोर्ट का मेंशन है विच इज कॉल्ड द वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2023। उसका मैं नाम लिख देता हूँ, वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट ऑफ 2023। एंड ये रिपोर्ट कौन रिलीज करता है? डज एनीवन नो? दिस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय अ स्विस ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड IQ एयर। IQ एयर करके स्विट्जरलैंड की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये रिलीज करती है। एंड इन्होंने डेटा इकट्ठा किया है 7812 लोकेशन से, 7812 लोकेशन से, आउट ऑफ 134 कंट्रीज। ठीक है, तो 134 कंट्रीज का इनके पास डेटा है। एंड एनी गेसेस की इंडिया जो है कौन से नंबर पे आया है? एनी गेसेस की इंडिया की पॉल्यूशन में रैंक कौन सी है आउट ऑफ 134 कंट्रीज? बढ़िया, एकदम टॉपर वॉपर जैसा परफॉर्मेंस किया है हमने इस इंडेक्स में। ऐसे ही लोग कहते रहते हैं इंडिया टॉप रैंक्स में नहीं आता इंडेक्स में, बट क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंडिया इस रिपोर्ट में कौन सी रैंक पे आया है? फोर्थ और फिफ्थ फ्रॉम लास्ट? नहीं नहीं, ये दिस इज इन असेंडिंग ऑर्डर। दिस रिपोर्ट टेल्स कि भाई फर्स्ट जो आया है मतलब वहां पे सबसे ज्यादा पॉल्यूशन है, उस तरीके से रैंक है ये। दिस इज नॉट एज पर कौन कितना पॉल्यूशन फ्री है, बट मोर अबाउट सबसे ज्यादा पॉल्यूशन किसका, उसमें कौन फर्स्ट आया है। तो उस तरीके से इंडिया आया है थर्ड पोजीशन पे इस रिपोर्ट में। ठीक है, तो टॉप किया हमने, टॉप 3 में आए हैं हम, यानी कि तीसरी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कंट्री है इंडिया। नहीं, फर्स्ट और सेकंड हमारे पड़ोसी मुल्क हैं। एक साइड हमारा पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश, वो फर्स्ट आया है। दूसरी साइड हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, वो सेकंड आया है। तो दोनों लैंड मास हमसे अलग हुए हैं, वो फर्स्ट और सेकंड आके पापा का नाम रोशन किया हम लोगों ने। बट जोक्स अपार्ट, थर्ड पे आया है इंडिया एज पर दिस वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। ठीक है, अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग डेटा ये है कि जो 11 सिटीज इन्होंने आइडेंटिफाई करी हैं मोस्ट पॉल्यूटेड, कैन यू गाइस गेस उसमें से कितनी इंडियन सिटीज हैं? Out of the top 11 most polluted cities in the world, how many are from India? Can you guys make a guess? India top 3, let's go. We are always on. हाँ देखो, पॉल्यूशन में हम टॉप पे हैं, पॉपुलेशन में हम सेकंड नंबर पे हैं, उसमें भी नहीं नहीं सॉरी, टॉपर बन गए उसमें, तो हम फर्स्ट पे आ गए पॉपुलेशन में। तो 5, 4, 9 सब गलत जवाब। 10, 11 में से 10 हमारी हैं। 10 cities are Indian cities out of the 11 most populated cities। खुशी की बात नहीं है ये बिल्कुल भी, बट हाँ 10 में से 11 जो है इंडियन सिटीज हैं। और जो 11वीं है वो हमारी पड़ोसी सिटी है लाहौर, पाकिस्तान। तो या दैट इज द डेटा। अब इन्होंने बहुत सारे उसमें मैट्रिक्स बताए हैं कि इतने माइक्रोग्राम प्लस पर क्यूबिक मीटर वगैरह वगैरह, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ बेसिक आपको पता होना चाहिए कि इंडिया थर्ड आया है इस रिपोर्ट में। एंड 10 आउट ऑफ 11 आर इंडियन सिटीज। फर्स्ट और सेकंड पे आए हैं बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। तो PM 2.5 करके एक वो होता है, मेट्रिक होता है जिसको मेजर करते हैं हम व्हाइल मेजरिंग पॉल्यूशन। पार्टिकुलेट मैटर इसका फुल फॉर्म होता है PM का। उससे मेजर किया जाता है कि कितने पार्टिकल्स सस्पेंडेड है एयर में, क्योंकि उसी से हमें पॉल्यूशन का पता चलता है। तो पार्टिकुलेट मैटर 2.5 के जो लेवल होने चाहिए इंडिया में, उसके कितने टाइम्स हैं? कैन यू गाइस टेक अ गेस? अगर मान लो PM 2.5 का लेवल 100 होना चाहिए, तो इंडिया में कितना है, कितना मल्टीपल है? एनी गेसेस? नॉर्मल का कितना मल्टीपल है PM 2.5 इंडिया में, पार्टिकुलेट मैटर? Yashika is saying particulate matter scores are probably lesser. Dhriti, you had the correct response. Dhriti, you are pretty close. It's 7 times. Exactly 7 times. 7 times is the answer. 7 गुना ज्यादा पार्टिकुलेट मैटर है इंडिया में, जितना उन्होंने बोला है कि होना चाहिए आइडियली, उससे 96% ज्यादा है। तो 96% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन एक्सपीरियंसेस 7 गुना ज्यादा वैसा। तो WHO की जो गाइडलाइंस है उससे 7 टाइम्स एक्स्ट्रा चल रहे हैं हम। क्या बात है। तो मेरी तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी धीरे धीरे कम हो रही है दिल्ली में रह के। आप लोग जो खुश नसीब है जो दिल्ली में नहीं रहते, उनकी थोड़ी और धीरे कम हो रही है, बट कम तो हम सबकी हो रही है।
ठीक है, तो बट ठीक है, आई होप कुछ ना कुछ करेंगे हम लोग इसके रिगार्डिंग, या फिर देश छोड़ना पड़ जाएगा, इतना पोल्यूशन हो जाएगा, वी डोंट नो, but yeah, quite concerning. So yeah, that is about this article, vehicular emissions top contributor to air pollution, and फिर जो रिपोर्ट थी मैंने आपको बता दिया उसके बारे में. Then let's talk about the topic of the day, what Trump 2.0 means for India. आप लोग मुझे बताओ, आपको क्या लगता है, is the election and coming to power of Trump beneficial for India, or you know, worse for India, or let's say, are we in a better off position now or in a worse off position now that Trump has come to power? What do you guys think? What are your opinions on this? Before I tell you कि क्या क्या implications हैं, क्या क्या इसके repercussions and फायदे हैं, do you think we would be better off or we would be worse off now that video lag हो रहा है? Is the video lagging? Am I lagging? Is the video lagging? Yes, no, everything okay? ठीक है, responses तो आ रहे हैं, तो I'm assuming I'm not lagging, at least my voice is not lagging. No is saying mid लिख रहे हैं लोग. Trump is very unpredictable and has a different view on world peace entirely. That's true, I agree to that. Unstable since his 3 a.m. tweets might make or break the futures of so many countries. I agree to that as well. Arman is saying mid, manufacturing base shifts from China to India, but goods are more expensive because he will put tariff. Yes, that is a very important point. He mentioned it in his manifesto as well, I mean, in his campaign as well, that he would be increasing import tariffs because of multiple reasons. Because primarily to control inflation in America, जो all time high लगाता जा रहा है with every subsequent month. तो inflation को control करने के लिए उन्होंने बोला था कि tariffs वगैरह हम बढ़ाएंगे. And apart from tariffs, एक और चीज जो इंडिया के फेवर में शायद ना जाए is a lot of protectionist policies of Trump, not just in matters of trade, but also in matters of immigration, also in matters of how he treats expats or foreign nationals or entry of citizens of other countries into US. तो उस पे भी काफी ज्यादा मुझे लगता है restrictions अब लगने वाले हैं, because he is very anti-immigrants in some aspects. तो वो चीज भी एक तरीके से हमारे लिए डाउन साइड हो सकती है. बट प्लस साइड्स भी काफी सारी हैं. प्लस साइड्स क्या क्या है हमारे लिए? प्लस साइड is कि we share a good relationship, like Indian diplomacy shares a good relationship with Trump, so उतना ज्यादा जियोपॉलिटिकल फ्रंट पे प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए हमें. एंड जो इनिशिएटिव्स हमारे चल रहे थे while Joe Biden was in power, वो मुझे लगता है और ज्यादा विगर के साथ चलेंगे, और ज्यादा एंथुजियाज्म के साथ we'll increase our partnership and bilateral engagement with the US, be it in terms of defense, be it in terms of technology, be it in terms of logistics, be it in terms of trade. वो सब चीजें बढ़ने वाली है. बट वही है, नेगेटिव implications वही हो सकते हैं कि he might announce something erratic on a geopolitical front which may or may not impact India. He might impose trade sanctions, import tariffs, all of those things which may or may not, most likely would not go in the favor of India. And of course there is the immigration वाला चीज. तो डोनाल्ड ट्रंप की हम बात स्टार्टिंग से करते हैं. सबसे पहले he has one second term in office, has defeated existing vice president Kamala Harris, and रिपब्लिकन है ये, डेमोक्रेटिक वाली इनके ऑपोजिशन में थी Kamala Harris, उनको हरा दिया है. कौन से नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं डोनाल्ड ट्रंप? व्हाट इज हिज नंबर? 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं वो मुझे चैट बॉक्स में जल्दी से बता दो. एज है इनकी 78 years, and he's only one of the 2 presidents who have been elected to a non-consecutive second term. यानी कि बैक टू बैक तो नहीं आए, एक बार आए फिर दोबारा नहीं आए फिर दोबारा आ जाए, ऐसे सिर्फ 2 लोगों ने किया है. एंड ट्रम्प इज वन ऑफ देम. एंड कमला हैरिस अगर जीत जाती तो वो बन जाती पहली इंडियन अमेरिकन person to be a US president, and also the first black woman to be black. तो पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे उनको ब्लैक बोलेंगे ब्राउन बोलेंगे, बट हाँ ठीक है, a person of color to become the president of United States, a woman of color. person तो बराक ओबामा बन गए थे, woman of color also, but वो हार गई, तो maybe next time, I don't know.
अब ट्रम्प आ गए हैं पावर में, तो अब बात करते हैं कि वेस्ट पे क्या इम्प्लीकेशन होगा इसका। तीनों में एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। वेस्ट पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, एंड ग्लोबल क्या इम्प्लीकेशन होगा। वेस्ट पे तो आप कह सकते हो कि जैसे बिडेन वाज एक्सपैंडिंग द अरब इजराइल वाला नॉर्मलाइजेशन, एंड ही सेड कि हम इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं बट वी डू नॉट रियली सपोर्ट वॉर, एंड आप सीज फायर करो, यू ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, वी आर नॉट इन फेवर ऑफ अ वॉर। बट ट्रम्प जो है, मुझे नहीं लगता ही वुड होल्ड बैक सो मच. He would take a more aggressive stance and would aggressively support Israel as compared to Joe Biden. But that is what my understanding says. Let's say what happens. There is a good possibility of the war escalating to a greater level now that he has come to power. Because he is very, as most of you said, unpredictable, erratic, arbitrary in his decision making. So we'll see if he supports the Israel war just like Biden was, और ही सपोर्ट्स इट इवन मोर. एंटी तो नहीं होंगे वो, ऐसा तो नहीं होगा कि भाई लड़ाई लड़ाई माफ करो, सब अपने घर जा रहे हैं, शांति से सोएंगे, पिज्जा खाएंगे, मस्ती करेंगे. वैसा तो उनका हाव भाव नहीं लग रहा है मुझे. बट या दैट्स अबाउट वेस्ट एशिया. अब उसके बाद अगर हम बात करें कि इंडिया पे क्या इम्प्लीकेशन होगा, इंडिया पे हम बात कर ही चुके हैं वैसे मोर और लेस. टैरिफ रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ सकती है, इमिग्रेशन रिलेटेड एक प्रॉब्लम आ सकती है. बट जो हमारे इनिशिएटिव्स हैं, जैसे I2U2 हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, क्वाड ग्रुप वाला हमारा इनिशिएटिव चल रहा है, ट्रेड टाइज हमारे चल रहे हैं, मिलिट्री एक्सचेंज बहुत सारे हमारे चल रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज हमारे बहुत सारे चल रहे हैं, उन सबको थोड़ा इम्पीटस मिलेगा, उन सबको थोड़ा बूस्ट मिलेगा. बट वो ये कि वाइल यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, देयर आर इश्यूज लाइक माइनॉरिटी राइट्स की अगर आप बात कर लो तो वहां पे नुकसान होगा. प्रेस फ्रीडम, ह्यूमन राइट्स की अगर आप बात कर लो तो वहां पे नुकसान होगा. एंड यही क्लाइमेट चेंज की अगर आप बात कर लो तो वहां पे काफी दिक्कतें आने वाली हैं विद द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन. टैरिफ्स की हम बात ऑलरेडी कर चुके. एंड यही सारी चीजें हैं. विल सी, धीरे धीरे थिंग्स वुड अनफोल्ड एंड विल सी हाउ ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद the geopolitical issues and how it impacts India as well. ठीक है. So yeah, that is about the Trump thing. Let's talk about this last article, which is why did Supreme Court uphold the Madrasa Act. ठीक है, चलो आर्टिकल पे चल के देखते हैं. आर्टिकल से ही समझते हैं इसको कि यूपी मदरसा एक्ट था क्या. बेसिकली मैं ओवरव्यू आपको दे देता हूँ जब तक हम आर्टिकल पे जा रहे हैं. इसमें ये था कि हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बोला था कि यूपी के जो मदरसाज हैं वहाँ पे जो एजुकेशन इम्पार्ट हो रही है, दैट इज नॉट ऑफ द राइट क्वालिटी एंड नॉट ऑफ अ यूनिफॉर्म नेचर. तो एक तरीके से दैट इज गोइंग अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ दोज स्टूडेंट्स, एंड वी वांट टू मेंटेन सेक्युलरिज्म इन एजुकेशन. इस वजह से वी आर स्ट्राइकिंग डाउन this particular act, which is the UP Madrasa Act of 2024. तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर मैटर किया सुप्रीम कोर्ट में. सुप्रीम कोर्ट ने उस जजमेंट को रिवर्स कर दिया और उन्होंने बोला कि क्या कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी जो इस एक्ट की है उसको चेक किया, एंड दे सेड दैट दिस इज नॉट वायलेटिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एंड ये इनफैक्ट हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो वायलेटिव है कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज इट इज वायलेटिंग आर्टिकल 25 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन and the other religious related articles which allow religions to propagate their religion, run minority institutions, वो सारी चीजें. और उन्होंने बोला कि जो एजुकेशन है वो ठीक ठाक चल रही है, ऐसी कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है. ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या लिखता है. सुप्रीम कोर्ट upheld the constitutional validity of UP Board Madrasa Act with exceptions. Top court said Allahabad High Court decision aside, which had deemed the act to be in breach of principles of secularism, जो मैं आपको बता रहा था. In 3-judge bench headed by DYC contended that provisions allowing madrasa board to award higher अच्छा हाँ, exceptions क्या है इसमें. exceptions ये है कि भाई आप हायर डिग्रीज नहीं दे सकते मदरसा से. मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि मैं मदरसा से ग्रेजुएट हूँ और मैं मदरसा से पोस्ट ग्रेजुएट हूँ. उन डिग्रीज को ये बोला जाता था कि अंडर ग्रेजुएट को बोला जाता था कामिल एंड पोस्ट ग्रेजुएट को बोलते हैं फाजिल. तो आप कामिल और फाजिल नहीं बन सकते मदरसा से, आप स्कूल एजुकेशन ले सकते हो. बिकॉज क्यों नहीं बन सकते, क्योंकि दिस इज इन कॉन्ट्रावेंशन विद द यूजीसी एक्ट, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट ऑफ 1956. कहता है कि सिर्फ जो यूजीसी एक्ट के अंडर एनरोल्ड यूनिवर्सिटीज हैं उन्हीं के पास ये अथॉरिटी है कि वो डिग्रीज ग्रांट कर सकते हैं हायर एजुकेशन की, बी टी ग्रेजुएशन डिग्रीज और बी टी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्रीज. तो कहीं पे भी आप पढ़ोगे तो ऑल द इंडियन यूनिवर्सिटीज विच ग्रांट दीज डिग्रीज आर सर्टिफाइड बाय यूजीसी. तो वो उन्होंने एक्सेप्शन वहां पे कार्व आउट किया है.
हाउ डू मदरसाज ऑपरेट, अब इसमें यही बताया कि मदरसा सिस्टम की हिस्ट्री क्या है एंड हाउ इट केम ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत, एंड कैसे फिर नोटेबल फिगर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, राजेंद्र प्रसाद एंड इन सब ने जो है कंट्रीब्यूट किया इस पर्टिकुलर सिस्टम में. देन यहाँ पे कुछ स्टैट्स वगैरह दिए हैं कि कितने लोग मदरसाज में पढ़े हैं एंड इंडिया में कितने मदरसाज हैं एंड वहाँ पे कैसे ऑपरेशन होता है सारा. केस क्या है, सिंगल जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट व्हाइल हियरिंग अ पिटिशन expressed doubt regarding the validity of the act. Mr. Javed was appointed, fixed salary, ठीक है. He approached the High Court. He said he should receive a salary equivalent to. ये केस की डेप्थ में जाने की आपको जरूरत नहीं है. These are facts of the case. वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. आपको बस ये तीन चीजें जानने की जरूरत है. Supreme Court upheld the constitutionality of UP Board of Madrasa Act, except for provision to law degrees. Court emphasized need for state to balance quality education with autonomy of minority institutions. While respecting their religious character, court said state regulation of madrasas, even with religious instruction, is valid as long as it is not in breach of legislative competence or overstepping minority rights. ठीक है? So this was what the article is all about. बहुत ज़्यादा इसमें deep जाने की आपको ज़रूरत नहीं है legal analysis में. You just need to know the overview and the facts. Alright, क्या चल रहा है? I am your 45th and 47th president से ट्रम्प कामली. Yes, 47th नंबर के president ये बने हैं. इससे पहले 45th बने थे. Arman is saying Grover Cleveland was the first one to serve. Yes, correct. He will stop Palestine aid and send more weapons to Israel. Yes. I mean, I'm not sure if he hates the Muslims or not, but he definitely supports Israel for sure. He's been an open Israel supporter. He was on call with Netanyahu last week. Huh. Mishika is saying, is there any way to contact Salik sir? I had some doubts from his paid class. I'll ask him if I can share his contact details, either his email ID or his phone number. I'll let you know whatever way he finds comfortable to, get contacted. बाकी उनकी जब होगी शाम को तो आप क्लास में भी पूछ सकते हो. I think आज तो क्लास होगी सलिक सर की. You can ask him in his class. I'm sure he would definitely answer. And yeah, that brings us to the end of today's analysis. We'll quickly do our vocabulary before we wrap up today's session. And once again, a reminder, the last lab sessions are starting from Monday, from 11th of November. First one being the 60-minute English crash course by Siddharth sir. Make sure you don't miss it. Then, coming to our vocabulary, the first word for the day is complicity. Complicity simply means being complicit in a particular thing, a secret agreement or cooperation between two parties for an illegal or dishonest purpose. So that is what is called being complicit or complicity. Synonyms are conspiracy, collusion, connivance. Antonyms are ignorance, innocence, naivety. She is suspected of complicity in the fraud. The next word is aplenty. Aplenty मतलब होता है sufficient, काफी. Being more than enough without being excessive. यानी कि जितना चाहिए उससे थोड़ा ज़्यादा है, but बहुत ज़्यादा नहीं है. That is what is aplenty. Enough, sufficient, extra. Antonyms are insufficient, lacking, scant. Sentences, there were problems, aplenty at work. All right. Then there is the last word, which is gumption. Gumption मतलब होता है ability to make intelligent decisions, especially in everyday matters. So you guys need a lot of gumption in the last phase of your CLAT preparation. Synonyms are prudence, wisdom, sense. Antonyms are indiscretion, imprudence, and stupidity. With his gumption, he will make a success of himself. And I hope you all do that as well with your gumption. So gumption is intelligent decision making in everyday matters. Aplenty is sufficient. And then complicity is being engaged or being a party to an illegal or dishonest thing or a purpose. And that brings us to the end of today's session. Today's Hindu analysis was pretty interesting, coffee diverse topics. And yeah, we'll meet again tomorrow at the same time. Today's 8 p.m. session is by Siddharth sir on decision making. Make sure you don't miss it. And tomorrow 3 p.m. we'll meet again for the Hindu analysis along with the mentee quiz. As per popular demand, कि मेंटी क्विज पैराग्राफ बेस्ड कराया जाए फ्राइडे को, तो वील हैव अ पैराग्राफ बेस्ड मेंटी. आई विल हैव प्रोबब्ली 2 to 3 पैराग्राफ्स फॉर यू, यानी कि 2 to 3 डिफरेंट टॉपिक्स जिनसे एसोसिएटेड आई वुड बी आस्किंग यू 4 to 5 क्वेश्चंस ईच. सो यू कैन एक्सपेक्ट 14 to 16 questions in tomorrow's mentee quiz. I would not be disclosing the topics, but these would ideally be topics from the month of September and October. So make sure you revise your most important topics from the month of September and October for tomorrow's mentee quiz.
And I'll see you all tomorrow with another Hindu analysis tomorrow at 3 p.m. same time, same jagah. Bye bye. Thank you so much. Take care. Arman is saying, how old are you? Recently graduate हुआ, guess कर लो यार. uh, how does that matter? शादी का रिश्ता लेके आना क्या आपने मेरे लिए? अभी बहुत टाइम है मेरी शादी में. बट ठीक है. I am less than 25 and more than 20. I'll leave you with that. Ciao. Bye bye. Signing off, guys.